Bhavika, she had some schoolwork. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. यथा दीपो निवात्तस्थो नन्गते सोपमा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः यथा दीपो निवातास्थो नन्गते सोपमा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः यथा दीपो निवातास्थो नन्गते सोपमा स्मृतः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः. Yes, please read the shloka. आस्था पढ़ो. श्लोका पढ़ो. कोपिल तो पढ़ो श्लोका. हाँ, हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेन्द्रते सोपनास्मृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जातो योगमात्मना. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self. ये उदाहरण बहुत ही अच्छा है. Purport में बताते हैं. A truly Krishna conscious person, always observed in transcendence, in constant undisturbed meditation on his worshipable Lord, is as steady as a lamp in a windless place. ठीक है. कि जैसे जो लैंप है, ठीक है, जिस जहाँ पे हवा नहीं होती है वो बिल्कुल भी हिलता जुलता नहीं है. वैसा का वैसा अगर आप सबने दिया जलाया होगा, वी यूज्ड टू ऑफर द घी लैम्प टू दामोदर, सो यू मस्ट हैव सीन कि जहाँ हवा नहीं होगा इट विल नॉट वेवर, इट रिमेन देयर. तो सिंपली सिमिलरली द ट्रांसेंडेंटलिस्ट whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self. आप लोग अगर चाहते हो कि आप अपनी भक्ति में स्टेडी रहें, मैंने खा लिया, मेरा दरवाजा कर बंद. सो जैसे एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, तो अगर आप सभी देयर इज अ सीक्रेट, यू नो, हाउ टू बी स्टडी इन वंस डिवोशनल लाइफ. दैट मीन्स वन हैज टू हैव कंट्रोल्ड माइंड. As says, there is a saying also, conquer the mind, conquer the world. कि अगर हमारा मन कंट्रोल्ड में है तो हम क्या है, बहुत स्टडी रह सकते हैं अपनी डिवोशनल लाइफ में. Because it's the culprit is mind only, you know, it's in the 11th canto also there is a statement. It's not the problem is because of the people, because of the planets, because of the demigods, or because of anything else, but it's the mind. ये मन ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी किसी और चीज से प्रॉब्लम नहीं आता है. तो अगर यही कंट्रोल हो जाए तो हम लोग काफी स्टडी और कंट्रोल सेंस में रह सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन की बात आ रही है. ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसेंडेंस. क्या लिखा? ट्रूली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसेंडेंस मीन्स अ ट्रूली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज वन हु इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ कृष्णा. So one who is always conscious of Krishna is all the time Krishna conscious. So if you are like, there was a story, I think मैंने पहले भी बताई थी, सचिनंदन महाराज की किताब में मैंने पढ़ा था. So I think I have narrated this one before also. जिसमें एक साधु होता है जो जंगल में मेडिटेशन के लिए बैठा होता है. मतलब इट्स लाइक अ ऑलमोस्ट डार्क एंड वन यंग गर्ल जस्ट कमिंग फास्ट रनिंग, वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आती है और इस साधु को टक्कर मार के तो भाग जाती है. पता ही नहीं चलता है, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शी जस्ट गो, मतलब चली जाती, दिखती नहीं है. एंड दिस साधु वाज वेरी डिस्टर्ब्ड. व्हाट हैपेंड? शी जस्ट ट्राइड मी एंड शी डिडंट इवन बॉदर टू से सॉरी एंड एल्स. He was like totally disturbed in his mind. And the when the it was daytime, when it was like little morning hours हो चुके थे, सूर्य निकल चुका था, वही लड़की वापस आ रही होती है. So then she pay the danvats to the sadhu. मतलब please accept my humble obeisances, like that. Then the same sadhu says, like अभी रात को when it was a dark, you just hitted me hard. तुमने इतनी जोर से मुझे मारा और you just went and you didn't said even bother to say sorry, and now you're coming and offering your danvats to me. What's that? You know. So that young lady, she says,
मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने किसी को मारा है. आई डोंट इवन रियलाइज दैट आई हैव हिटेड समवन, एंड मे बी, एंड दैट्स you. I don't know, I didn't realize it. He said, what's the reason you didn't realize it? He says, where you were going? इतनी तेज तेज कहाँ जा रही थी कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम किसी को मार के गई हो, कि किसी को तुमने ऐसे ठोकर मारा है या लात मारा है. She says, then very shyly she said, I was going to meet my lover. After a long, we are uniting. इतने समय बाद हम एक साथ में मिलने वाले थे. So I was totally absorbed in his thoughts, and that's how I might have forgot. I might have not realized that I've hit someone. So I just so observed. And then that sadhu, actually, he realized. He says, it's not the mistake of this young girl. He said, it's my mistake because I was not that absorbed in the holy names. If I was so absorbed in my chanting, if I was so much in love with Supreme Person, तो मेरा meditation में कितना absorption वाला होता, मुझे भी नहीं पता चलता कि मुझे किसी ने मारा है. So this might be, and sometimes we can learn from the mundane people also. They just realize कि मेरा absorption इतना नहीं है. That's why these things disturbed me, the outer senses. ये बाहर की चीजें मुझे डिस्टर्ब कर गई. ठीक है. उसी तरीके से जैसे समुद्र होता है, ठीक है, एक छोटी मछली होती है और एक बड़ी मछली होती है. छोटी मछली क्या होती है, सरफेस पे होती है ना. दैट्स व्हाई दे गेट ट्रैप्ड बाय द फिशरमैन. जो लोग ऐसे फिशर मछलियां पकड़ते हैं वो बड़ी छोटी मछलियों को जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि सरफेस पे होती है. मगर जो शार्क है, जैसे वेल है, उसको पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डीप ओशन में जाना पड़ता है दूर तक, बिकॉज वो बहुत गहराई में होती हैं और उनको पकड़ना इतना आसान भी नहीं है. दे लाइक सो much inside, they were so much inside and so deep into the ocean, so it's difficult for to catch them. Similarly, if we are our Krishna consciousness, if we are not so observed, अगर हम सिर्फ सरफेस पे हैं, माया ऐसे पकड़ के ले जाएगी. Maya will come, just take you and go away. Because we are on the surface and there are so many temptations outside, so much disturbance. Oh, what's going on? What's going on? We will like looking outside. And the Maya in the form of fishermen will grab us and will take us away. But if we will like the whales and sharks, so observed into the deep ocean of Krishna consciousness, so observed, देन मजाल है, तब तक माया को भी ढूंढने के लिए, अरे कहाँ है रे भाई, वेयर आर यू, वेयर आर यू, द माया विल लुक आफ्टर यू, वेयर इज दिस पर्सन हैज गॉन. एंड then it's difficult for Maya to catch us. So that's the secret. तभी कहा जाता है, that's like my Guru Maharaj has said many times, like go dive deep into the chanting. Dive deep. This instruction all the time whenever I do my japa, ये हमेशा मेरे मन में बार बार घूमता है. Because like this voice just whenever I chant, it just comes, dive deep, dive deep. Means go deep in your chanting, go deep into your chanting. Means listen very carefully, attentively, just be observed. And when you are observed, you can constantly chant as what was the verse in Shiksha Astakam, like Chaitanya Mahaprabhu has says, the Tirundapi suni chena tarorapi sahishnana amanina man dena kirtanya sadahari. When you chant in a humble state of mind, in that state you can go on chanting constantly for long. कि जब आपका मन स्थिर है, आप हम्बल हैं, कोई टेंशन नहीं है, you're just chant, you can chant for long hours. मगर जब आपका मन स्थिर नहीं है, कांस्टेंट हम्बल नहीं है, then you like हरे कृष्णा कितनी माला रहेगी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, like you're all the time constantly looking at the counter. And जैसे ही लास्ट माला आता है, भक्त महाभाव में चला जाता है. Oh, finally हरे कृष्णा, oh it's my last round. So that you need not to do. Then Maya is there always to catch you all, because you are not so observed. तभी हमारा चैंटिंग इतना हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, because वो पेशेंस धैर्य नहीं रहता, because you are not in a steady in your mind, you are not that humble, or you are not what says your mind is peaceful, because it's carrying so many things in your mind whenever you chant. आज ये बनाना था, ये रह गया, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, so many things comes in the mind. But if the mind is controlled, it is somewhere sober, like obedient, then you can chant for long. And this is the secret of being steadiness in one's meditation and being steadiness in Krishna consciousness. So agar hame aage badhna, then you won't be like disturbed. As I quoted this verse, Shlok quote many times, like Tamal Krishna Maharaj says that Krishna consciousness means anesthesia consciousness, means it's a matter of absorption. And I also once time I said that Krishna consciousness, if you want to define in one word, that means absorption. Absorption either in your services you render,
Either it's your reading, either it's your hearing, either it's the kirtana you're listening, either you are chanting the holy names, as Asta Master just have come from the Harinam Kirtan. So either you are chanting, either you are doing book distribution. So much absorption is there. Like you remember when we go for book distribution, when we come back, the all the time उस person ने मुझे ऐसा बोला आज ऐसा बोलना चाहिए था. Like your thoughts like absorbed in those कि what has happened, what the conversation was. You're totally absorbed, isn't it? So similarly, it should happen when we hear some Bhagavatam class or hear some Bhagavad Gita class. The points just reflects in your mind. वो करना चाहिए. अच्छा ये बताया था प्रभु जी ने या माता जी ने महाराज ने. Okay. I should ponder on that. Okay, how to do that thing. We just meditate on that. The contemplation should be there, you know. The contemplation should be there, and the automatically the remembrance is there that what to do, what not to do. As you people says, कि माता जी, when we hear, it remains in mind and we put it into practice. But जब हम लोग नहीं सुनते हैं, थोड़ा इधर उधर होते हैं, तो भूल भी जाते हैं जल्दी से. वो क्यों होता है? क्योंकि constant practice नहीं है. When the constant practice is there, constant contemplation also come, and when the constant contemplation comes, the remembrance was automatically there. You know, and the Vishwanath Chakravarti Thakur in the 12th chapter has given in commentary. He stated there that there are three aspects. I think मैंने पहले भी बताया है. First is abhyasa, that is practice. And the 8.8 it says abhyasa yoga yuktanam. By the practice, the purification comes. You know, when we put it into practice every day, the chanting, Mangalarti, reading, hearing, we have made some schedule. Regularly we are doing. Then the contemplation comes. अच्छा ये मैंने सेवा की, इसमें क्या था, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते थे. अच्छा वो मैंने वर्ड्स पढ़ा, उसमें क्या था. अच्छा ये हम लोग वर्ड्स मेमोराइज कर रहे थे, इसमें क्या बताया था. सो द कंटेम्पलेशन कम्स. कंटेम्पलेशन मीन्स मननम. आप उस पर कंटेम्पलेट करते हो. अच्छा ये क्या था, इंट्रोस्पेक्ट भी आप कह सकते हो इसको. और when this contemplation stage comes, then automatically the remembrance will there, स्मरणम will there. You know, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको स्मरणम आएगा उस चीज का. मगर प्रैक्टिस तो करो, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे जब करने का हरे कृष्ण महामंत्र का. इफ यू like Krishna says satatam kirtayanto mam means 24/7 chant my holy names. So if you practice to chant 24/7, you know, might not be on the beads, maybe back of your mind, or maybe just singing all the time Hare Krishna. So by default you will speak Hare Krishna. I remember today what had happened. I don't know, ऐसा by chance हुआ है. It's not certain things. As 2 o'clock, I just woke up. मैं सपने में what I was doing in my dream, I was chanting on my beads, and suddenly my beads fall off. You know, क्योंकि I think I was listening something कि हमारी beads क्यों गिर जाती, कुछ तो था. I forgot. Someone was saying और joking, मुझे याद नहीं है, कुछ तो बात चल रही थी. I don't, मुझे ये भी याद नहीं मैं किससे बात कर रही थी. Some devotee I was talking to says कि माला इसलिए गिर जाती है कई बार, तो हम लोग महाभाव में चले गए. पता नहीं चला कि यार वैसा तो कंडीशन नहीं है. और कई बार ऐसे गिर जाता है क्योंकि हम नींद में होते तो पता नहीं चलता. So that was there. So अभी हुआ क्या, when I was in my dream, it's a dream thing, it's not the reality I'm telling. अभी आज सुबह की बात है, 2 बजे की बात है. I just woke up and क्या हो रहा था सपने में, I was just chanting on my beads and my beads fall off and I started laughing. ओहो, देखा इन्होंने बोला था नींद में होते तो गिर जाती. और immediately I just woke up and I say, oh, I have to chant my lords. So it sometimes it happens because sometimes some talk is in your mind. अब ये बात हमारी just हुई थी. I don't remember, मुझे याद भी नहीं कि किससे मैंने ये बात की, क्या किया. But certain way it remain in mind regarding the chanting or something. It just come in the dream sometimes, you know. And immediately I feel like I was chanting on my beads, you know. So कभी ना कभी सपने में भी ऐसा लगता है आप जब कर रहे हो. Because when the meditation is there, it comes in the dream also because the absorption is there somewhere. And so try to, I was not telling कि आप सपने में ऐसे लीजिए. I'm telling I'm not a paramahansa. I'm just giving you one example like that way कि जब हमारी absorption होती है, किसी से हम बात भी करते हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं हम जब जब करते हो वो चीज चाहे सामने आ जाएगी या ऐसा रहेगा. तो कंटेम्पलेशन होता है ना कहीं, देन ऑटोमेटिकली स्मरण इज देयर. सो दैट व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से. सो to be controlled mind, we need to put it in, means have to have the practice. It's not just an overnight process कि मन अपने आप चौसठ वाला कि मन कंट्रोल है. नहीं, कृष्ण अर्जुन ने खुद बताया है कि हवा को फिर भी मैं देख सकता हूँ मगर मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है. It's very difficult task to control a mind, you know. So better we need to put a practice of this devotional activities. हम जितना ज्यादा practice करेंगे मन उतना ज्यादा नियंत्रण में रहेगा, you know. कि like or you can make an habit, you know. Like some people are very addicted to the mobiles or the social media. This is what I was also practicing nowadays. So I'm just telling you all, sharing my experience कि आपने जैसे suppose you have
decided to chant particular number of rounds, you know. जैसे आप 16 माला तो करते ही हैं, suppose you decided to chant some extra rounds also, कि आज मैं 20 माला करूंगी या 25 माला करूंगी, like that way. Or maybe you can make a vow that today I will read one chapter of Bhagavatam, और आज मैंने इतने श्लोक मेमोराइज करने हैं, या आज मैंने ये किताब पढ़नी पढ़नी है. सो इफ यू जस्ट मेक अ वाव एंड यू कैन से कि जब तक मेरा ये पूरा नहीं होगा मैं तब तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी. सो इफ यू मेक जस्ट वाव्स, so it will helps you to get detached from your Maya things and get more absorbed in devotional activities. That is what helping me also, because अब इतना मोबाइल की तरफ इतना ध्यान नहीं हो पाता है, because it's like all the time, because there are activities to carry on with. I have to chant my rounds, then I have my services to carry on, course hai, and then Bhagavatam study hai, then other things are there. You didn't even like to see your mobile after some time, so you get lesser time with the Maya, because you are giving more time to your devotional activities. That helps you to control, having control over your mind, so that it remains more fixed in your devotional aspect rather than on material aspect. Okay, so like that way you can do this little practices, so like that way you can be make your mind steady in devotional activities. Okay, so that was there. So we'll move to the next shloka. If anybody have any comment on this verse or any realization, so they can share, or otherwise I'll be moving to the next verse. Yes, किसी को कुछ कहना है इस वर्स पे, या कुछ कमेंट है या कुछ एनीथिंग, or maybe I can take at the end. Okay, we'll move to the next shloka. पूजा माता जी, आपने श्लोका नहीं पढ़ा था तो आप ये वाला श्लोका पढ़ सकते हो. Oh, it's a long one, so maybe we can talk about a bit. We have 20 minutes. यत्र पारामते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पाश्यन्नात्मनि तुष्यति. पूजा माता जी, you want to recite the shloka? आप हरे पढ़िए, कृष्ण माता जी माता जी. पढ़िए. यत्रो परमाते चित्तं निरोधं योगे सेवया यत्र चेवत्मानात्मानं पश्यान् आत्मानि तुष्यति. Good. सुखम अत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिगृह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवयं स्थितस् चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्यद् दुःखसंयोगा योगं योगास्मस्मितम्. Translation. In the stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. तो क्या रिजल्ट है, फलश्रुति क्या है ये प्रैक्टिस करने का, योगा करने का, कि that is one get into the stage where we become अन्यभिलाषिता शून्य, means no more material desires or no more mental activity, material mental activities. You know, this is the perfectional stage of yoga. This perfection is characterized by one's ability to the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. तो इसका क्या है, इसका क्या निकलता है, when we are into the perfection, now we have attained the perfection in our yoga, उस समय क्या होता है, हम अपने आप को शुद्ध मन से देख पाते हैं. We are able to realize ourselves, I am this soul, I am not this body, and then you can rejoice in yourself. You know, oh, I am part and parcel of Krishna. Then you will realize, you know, then you need not, you आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने की. You will be happy, absorbed in service of Krishna. So that is the falashruti of perfection of the yoga. In that joy state, one is situated in boundless transcendental happiness. क्या बोलता है तब वो अपने एक बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस मिलता है, रियलाइज थ्रू द ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, बिकॉज नाउ योर सेंसेस इज प्योर. You can attain that stage when you're totally into the transcendental mode and you can enjoy the transcendental happiness. Established thus one never depart from the truth, and upon gaining this he thinks there is no greater gain. तो उसको इसके बाद लगेगा कि इसके अलावा और कुछ है नहीं जिंदगी में. वी पीपल वी आर प्रैक्टिसिंग, वी सेज नहीं नहीं थोड़ा ये चीजें भी देखनी चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड कि व्हाट इज द गेन वी आर हैविंग राइट नाउ इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. दिस इज, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है. You know, it's a बड़ा achievement कुछ भी नहीं है. You might consider being a CEO of a company is a great achievement, being a president or a prime minister is a great achievement, but I'll tell you, no, the
biggest achievement is having the control over one's mind and senses and being fixed in the devotional service of Krishna. This is the greater achievement. To attain Krishna prema is the real is the real achievement. This is the real achievement. Other than उसके कहते हैं ना बाकी सब पानी कम है. So everything is like पानी कम है. There is no value in that. So being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह observed है, वो बड़ी सी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, he is fixed, he is fixed. You know, ऐसे जैसे बात हुई थी कि अगर हमारा मन अशांत होता है तो आप चाहे कितनी ही शांतिपूर्ण जगह में क्यों ना चले जाओ, आप हमेशा अशांत ही रहोगे. You can never be like peaceful. And if you are rejoicing within and if you're happy within, if your mind is peaceful, तो आप चाहे किसी अशांत जगह में भी रहोगे, you will be like so cool and calm. So how it happens, this is the falashruti of like being practicing Krishna consciousness, attaining the perfection of this. So आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि you are absorbed in the holy names. Being situated in such a position, I can give you one realization of Rupa Goswami. रूपा गोस्वामी का खुद का रियलाइजेशन है ये, आप लोगों ने सुना होगा, शायद मैंने पहले बताया होगा. रूपा गोस्वामी कहते हैं ये जो 2 सिलेबल है कृष्णा, इसमें इतना नेक्टर है, मेरा मन करता है कि मेरे मिलियंस ऑफ ईयर्स हो, मिलियंस ऑफ माउथ हो, कि मैं ये चैंट कर सकूं और उन कानों से इनको सुन सकूं. मतलब like when we want something जो हमें बहुत पसंद आती है कोई डिश, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं काश कुछ ज्यादा पेट बढ़ जाता हमारा, कुछ ज्यादा मुख बढ़ जाते, हमारे माउथ ज्यादा हो जाते, वी वुड एबल टू ईट इट. सिमिलरली रूपा गोस्वामी से ये 2 सिलेबल कृष्णा में इतना नेक्टर है, आई वांटेड टू हैव मिलियंस ऑफ माउथ एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड स्टिल आई एम नॉट, मैं इसको बिहोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ अपने 2 कानों से और एक मुख से. आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट. I need more ears and more mouths so that I can relish it. ये उनका realization है. So we can understand how much nectar these holy names contain. How much nectar is in Krishna prema. हमें तो अभी उसका tinge भी नहीं मिला है. It's like so much nectar is there. So this is the biggest achievement or greater gain one can say. So being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. This scenario, man, you can see the example of Pandavas. They have gone through so much tribulations, but because being Krishna consciousness, they were never disturbed. Because उन्होंने हर समय भगवान की शरण ली है, and they were overcome all those things. So that's how that helped them, because they were fixed in Krishna consciousness. Even the Indradumna Maharaj, he got cursed to become an elephant. He was not disturbed. Ambarish Maharaj got a curse. It was a difficult situation. He was not disturbed. So like that way, we can see the examples of devotees also, those who are absorbed in Krishna. Like Parikshit Maharaj, he got a curse that he is going to die in 7 days. हमें कोई बोलते हैं आप मरने वाले वाले ही, what's going on, I'm really going to die, we'll be very disturbed. But Parikshit Maharaj got fully absorbed in Bhagavatam. Nothing bothered him. This is the power of absorption. So nothing disturbs us when we are fully absorbed. Okay, so इसका जो purport है वो थोड़ा लंबा है, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, so I will stop here because we are I don't want to get overtime. So anybody having any questions or comments, so I will take up, or any realizations, so please go ahead and don't wait for me to take your name. तो जिसको भी जो बोलना है, they can speak up. Yes, now it's your turn. I'm done with my turn. Yes, Hare Krishna. Anyone has to say or speak something? Please go ahead. Yes, Astha Mataji. हरे कृष्ण माता जी. Hare Krishna. Yes, माता जी, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं ना तो जोश Astha, एकदम please बढ़ speak जाते aloud, हैं. बच्चे, because I told you I don't have the earphones with my laptop. So Yes, so अभी आ रही है आवाज? yes, I'll try to. Yes. Yes. So माता जी के फेस्टिवल्स आते हैं ना तो भी एकदम हाई जोश पे हो जाते हैं कि Yes. जैसे एकादशी भी आती है ना तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है एकादशी को कि नहीं अच्छा आज तो पूरा दिन